Well, I am expecting a lot of fun, a lot of masti. It's a chick flick, so it has to be fun. And I think, and Richa and Kalki are, of course, wonderful actors. So a great chemistry between them and some great performances. I'm really looking forward to it. Actually, both. I mean, I work with Kalki, so I know Kalki closer than I know Richa. But I'm very fond of Richa as well. So let's see. And they're quite different looking. They're quite different in terms of the kind of films they do. So I want to see how they both come together and create their magic. Well, as I said, मैं already Kalki के साथ काम कर चुकी हूँ, तो I would love to explore an opportunity to work with Richa. I have a film called Raita with Irfan Khan, which is, I think we are looking at releasing it in February. So, and uske alawa, I have a couple of more things that I'm starting very soon. Thank you. Thank you. Yes. मैं बात कर ली है। ये हैं सर एक सेकंड। ये हैं मिर्ज़ा साहब जिन्होंने पिक्चर प्रोड्यूस की है। अभी आप ही इनसे बात कीजिए। सवाल कौन पूछेंगे? पूछिए। ये हैं मिर्ज़ा साहब, जिया के प्रोड्यूसर। Say what you want about the film. Sir, I just want to say this. ये ख्वाब था जो दो लड़कियों के साथ देखा गया था, जो हमेशा से एक चीज़ थी कि लड़का लड़की। मैं स्वीडन में रहता हूँ 27 साल से, तो मैंने कभी ये इख्तलाफ देखा नहीं. So I just wanted to make something, and there's the stories on the screen about girls. We are equal. That's the message I want to give. That's it. Thank you. नहीं, मैं चाहता हूँ कि फ्राइडे और जल्दी आ जाए. मैं वेट ही नहीं कर सकता हूँ उसका. बट इट्स ऑल इन कंट्रोल एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन द जनता. दे नीड टू कम एंड सी इट. हमको जनता तक पहुँचना है, रीच करना है. देखते हैं कल सुबह क्या होता है. आज वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है. ये छोटी पिक्चर है, वर्ड ऑफ माउथ वाली पिक्चर है, तो होपफुली रीच आउट कर पाएंगे. छोटी पिक्चर है, पता नहीं इट ऑलवेज अ कंटेंट ड्रिवन लीड वर्किंग एट. व्हाट एवर यू से, हाउ मच कॉन्फिडेंट आर यू विद योर कंटेंट? Very confident. See, I have two very brilliant actors. I have one debutant who's done really well. All have fit into their roles really well. The story, screenplay, whatever was at the beginning of the film has come out even better. So there's a lot of confidence regarding the content. I only took up the film because of the content. It has been shot in Sweden, I think. What would you say something about the details as well as the actors of It's a wonderful place. See, Sweden, जहाँ जिस मुल्क में हमने शूट किया था, वहाँ का सिटी है माल्मो. वर्जिन लोकेशंस हैं, नए लोकेशंस हैं. लोग बड़े वेलकम करते हैं आपको वहाँ पे शूट करने के लिए. काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन था. 30-40 दिन का हमारा शेड्यूल था. बड़े आराम से निकला था. एक्टर्स, हमारे जो एक्टर्स हैं फिल्म के, वो एक्टर्स हैं. They don't have any hang-ups with hanging around in the street and changing in a vanity van when there are difficult situations and stuff like that. तो वैसे कैमराडरी बहुत अच्छा था. वेरी इजी. जी, जब मैं खुश नसीब हूँ तो मैं एक्टर हूँ, वरना मैं बड़ा मेहनत करता हूँ कैमरा के पीछे. यस यस. सॉन्ग का टोन आता है उसमें. हम लोग जब भी शूट करते थे तो जब जिया जो भी बोलते थे तो पुराना गाना याद आता था. हाँ, तो ऑटोमेटिकली सबके लिप्स पे वो गाना होता था. तो हमने सोचा उसको लेके उसको एक रीमेक्स बना के उसको सॉर्ट ऑफ. थैंक यू.
tired because I've been in Delhi shooting and promoting here and promoting for Ribbon and being here for Georgia. So a lot of multitasking happening. So only few hours have left for the release. So how excited or nervous you are feeling? Feeling good. I'm feeling happy that it's finally coming out because we've been waiting for it to release for a while. And yeah, I like to be calm on the day of my release. So tomorrow will be a calm day. I get all excited the last week before my film releases, and then it's like it no longer belongs to me. That trailer is already created by a birds in the market. So have you got any unique reply from your colleague or? I think it's been really nice to do a film which is two girls going on a road trip, because we don't see a lot of girl bonding films, and we see a lot of boy bonding films. So that's the fun part of this movie for me. So what is the memory you take from this movie? My trip to Sweden. I mean, it's a beautiful country, and they have some strange traditions like jumping in ice cold water. So I'll remember a lot of things from Sweden. And of course, working with Richa and Arslan. Richa is anyway a friend, but working with her on a film has been amazing. Okay, so what do you like to say to the audience for your movie? Georgia is releasing tomorrow. Book your tickets. See you at the theaters. Thank you. Thank you.
do I have to say? Well, I think we made the film with all the heart, and it's a good story. You have Kalki and Richa for the first time, and I hope that tomorrow is the release now. I hope that the kind of love we've gotten for the trailer and the songs, we get the film for the film also. Yeah, I'm very nervous. Yeah, it's my first film, so I'm very nervous. I'm excited also about it. We have been getting some reports and everything, so let's see. I think we are expecting it to at least, we are a small film. We're coming on a very limited screens, so I'm hoping that whatever we're coming on, we get some good response. Well, the memories, a lot of memories. Yeah, this is my first film. It's my stupid. So I have every memory, like my every first thing that I've done, as far as acting is concerned, is from this film. So I have very fond memories, especially with the two girls, throughout the shoot. And yeah, now actually I'm more thinking about what is going to happen tomorrow. So that is something which my mind is preoccupied with. The trailer? Yeah, no, a lot of people gave me compliments. They said that you were looking natural and all that. But yesterday also we had a screening, and well, people seem to have liked it. Some didn't like it, but overall I think we are fine. We're fine. I would like to say, just please go and watch the film. Tomorrow is finally releasing. We have gone through a very hard, long struggle to release this film. It is a limited release. There are less screen shows, but please go watch it whenever you can. Thank you so much. Thank you so much. Wish him good luck for his movie. Mirza, brother. Yes. Thank you. अबे ये सब उधर मैं बोला कितना किसका है आदि भाई थोड़ा इस तरह यार थोड़ा इस वो पीछे बैनर में देख हमारी अधूरी कहानी का आपके लेफ्ट में राइट में मेरे राइट में ऐसा है तो हाँ ये एक तो है ATD या तो वीडियो हो ना यस थैंक यू हैप्पी दिवाली अगेन सबको जी I'm expecting a lot. I mean, I've loved the trailer of the film and I've worked with Howard sir, who's the director of the film. उनके साथ उन्होंने बहुत सारे हम लोग की फिल्म है, जैसे प्यार का पंचनामा में उन्होंने गाने कोरियोग्राफी की थी उसकी. So I've worked closely with him. So I'm looking and expecting a lot out of this film and hoping कि ये film hit जाए, बहुत बड़ी hit हो. So yeah, I have to just watch the movie now. All of them यार, काल्की, रिचा, ये लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. Aslan भी बहुत अच्छा एक्टर है and I think I'm looking forward to all their performances and मतलब मैं favorite pick नहीं कर सकता, तीनों की performances अच्छी होंगी I'm sure. I'm working on this project, सोनू के T2 की स्वीटी, which is with the director of प्यार का पंचनामा, लव रंजन सर, and वो next year release होने वाली है, January 12th अभी उसकी tentative date है and that's the only project which I'm doing currently. बिना रुके तो बहुत सारे ऐसे होने चाहिए, अभी देखेंगे आप लोग जब ट्रेलर आएगा, जो जल्दी ट्रेलर आएगा तो तब आपको देखने को मिलेगा. अभी मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता उसके बारे में, क्या कैरेक्टर है क्या चीज़, वो सारी चीज़ें अंडर रैप्स हैं, बट इट्स गोना बी वेरी एंटरटेनिंग. थैंक यू. Look here. Ma'am, your left, right? Right. Madam ji, एकदम सामने. Thank you, ma'am.
बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये फिल्म मेरे लिए काफ़ी ख़ास है। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इतनी मेहनत से उन्होंने बनाई है, तो इतने प्यार से बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत चले। और इट्स गॉट ग्रेट एक्टर्स, यू नो, रिचा, कल्की आर ग्रेट एक्टर्स। हावर्ड इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। मैं उनको एक्चुअली मेरे करियर के शुरुआत से जानता हूँ। उन्होंने मेरी पहली फिल्म मस्त को कोरियोग्राफ भी किया था। फारा खान भी थी और हावर्ड भी था, तो हमारी जान पहचान काफ़ी सालों से है। तो आई थिंक बिकॉज आई नो एवरीबडी, आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर देम एंड आई हैव कम हियर टू वॉच द फिल्म। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट। Yes, I've seen the trailer. So how was it? I think it was great. I think it's a feel-good space, which is like a rom-com, and I think such films can definitely do well. So ये एक रोड ट्रिप के ऊपर है, तो अगर आप जाना चाहें बॉलीवुड में से किसको पिक करना चाहेंगे अपने फ्रेंड कोई भी राइटर? रोड ट्रिप के लिए Me. ये ना मेरी फ्रेंड, माय वाइफ, आई टेक हर ऑन अ रोड ट्रिप फर्स्ट। ओके, तो कौन सा एक्सप्लोर करना चाहेंगे? हाँ, कौन से कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहेंगे रोड ट्रिप? व्हाट कंट्री डू यू वांट टू एक्सप्लोर रोड ट्रिप? I think Norway. नॉर्वे। Yeah. सुन रहे हो? मतलब अभी नेक्स्ट टाइम समझ जाओ। डेफिनेटली समझ गया, पूरे मीडिया के सामने बोला। सरकार का हाथ लगा। Oh my darling.
बात करता हूँ। एक्चुअली ये मेरा दूसरा कार्यक्रम होगा, अभी खत्म कर दूँगा, मैं छोड़ गया। देखिए ना, मेरा मतलब तो और आगे भी डाल सकते हैं सर, यही तो मतलब था। और आपके बच्चे जीनियस हैं, और जब अभी ये तो शुरुआत है, और बच्चे जी ये उनका कुछ नहीं, ये उनका हक था, उनका काम मतलब जब भी उनका तरीका टोटल है, और वही तरीका मुझे पाते हैं हमारे कनेक्ट उनका तरीका। Kabir sir, thank you so much. It had been an honor. Inshallah, next week, done for Bollywood. Then done next week we're here. 100%. So let's do it. 100%. I'm planning that. Tell me just what time you want. Evening, Friday or Saturday? No, please do. So I'm not doing anything on the weekend. Congratulations. This is my family. Everybody is my producer, my second producer, my second producer. Hi. Thank you, sir. Show. Got it? Thank you, sir. I'm blessed. It's not only, I don't believe my eyes. Jia kidhar hai, Jia? That's another Jia. All the success is already there. All the Thank you. Harsh, can you slot Coming?